अस्सलाम वालेकुम गाइस। 1 दिसंबर है आज और जैसे जैसे जो ये साल है वो इख्तिताम को पहुंच रहा है, हमारा वो एक साइकिल शुरू हो जाता है कि द ईयर स्टार्ट्स टू एंड एंड देन वी स्टार्ट वेलकमिंग अ न्यू ईयर एंड वी स्टार्ट मेकिंग रेजोल्यूशंस। तो रेजोल्यूशंस तो बनते ही इसलिए हैं कि वो नाकाम हो जाएं, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ मैंने देखी नेटफ्लिक्स पे जिसने मेरे थॉट प्रोसेस को बिल्कुल किक स्टार्ट कर दिया कि as we age, we're looking for ways to reverse the aging process and how to, deal with aging and deal with problems that come with aging. So the series is about how to live better. और मेरे ख्याल में फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि हम जो आज जिंदा हैं वो बेहतर कैसे अपने दिन गुजार सकते हैं एंड हाउ कैन वी बी लाइक आई सेड इन द टाइटल, हाउ कैन वी लिव लॉन्गर, हाउ कैन वी लिव बेटर एंड हाउ कैन वी बी हेल्दियर. सो नेटफ्लिक्स की सीरीज से इंस्पायर्ड है ये आज की गुफ्तगू एंड इट्स कॉल्ड द ब्लू, इट्स अबाउट द ब्लू zones, which is developed by a National Geographic's explorer called Dan Buettner. और उनकी 20 साल की रिसर्च है about 5 areas in the world जहाँ पे सबसे ज़्यादा उम्र के लोग पाए जाते हैं and mostly people who live longer than 100 years. तो उन्होंने 20 साल रिसर्च की इस चीज़ पे कि इन जगहों पे जो लोग रहते हैं जिनकी 100 साल से ज़्यादा उम्र है उसकी क्या वजूहात हैं, दैट व्हाट आर द कॉजेज़. और उन्होंने कोई 9 नुक्ते निकाले उसमें से. कुछ मुझे समझ आए, कुछ मुझे नहीं समझ आए, लेकिन उनसे इंस्पायर होके मैंने अपनी भी एक लिस्ट डिराइव की कि देयर आर थिंग्स दैट विल हेल्प अस लीड बेटर लाइफ्स एंड आई थिंक उन पे फोकस करना ज़रूरी है. सो आई वांट टू शेयर दैट विद यू टुडे. डैन ने जो 5 जगहें शॉर्टलिस्ट की उसमें बंदा सोचता है कि जी शायद कोई रिमोट जगह होगी जो कि अर्बन सिविलाइजेशन से दूर है, छोटी कम्युनिटी है, बट उसमें जापान का भी एक एरिया है. उसमें you've got somewhere in Sardinia, you've got a place in Greece, you've got a peninsula in Costa Rica, and you've got Loma Linda which is in California. तो जहाँ आइलैंड भी है, माउंटेनस रीजन भी है, वहाँ पे रस्टिक एरियाज भी हैं, लेकिन अर्बन एक यूनिट भी है. सो ऐसा नहीं है कि जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो लंबी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते. तो उन्होंने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन लोगों को रिसर्च किया, एनालाइज किया, लोगों के इंटरव्यूज़ हैं. एंड इफ़ यू हैव द टाइम यू मस्ट वॉच इट. इट्स ऑन नेटफ्लिक्स. इट इज़ अ 4-part series. But if you don't have the time and you want my takeaway from it, so this is what today's 101 is about. So the first thing that he talks about, which is common amongst all the people that live in all these 5 areas, is that they have a natural incorporation of movement in their lives. अब हम कहेंगे जी ओ एक्सरसाइज की बात हो रही है, बिल्कुल एक्सरसाइज की बात हो रही है, बट ये वो लोग हैं जो कि डाइट्स नहीं फॉलो करते, जो जिम मेंबरशिप्स नहीं हैं जिनके पास, जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स पे रिलाई नहीं करते. लेकिन जो मूव नेचुरली का फॉर्मूला है ना, वो ये है कि वो एक बड़े ही नॉर्मल और नेचुरल तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है. फॉर एग्जांपल ये लोग अपने घर का काम खुद करते हैं, समथिंग एज सिंपल एज मेकिंग देयर ओन बेड टू क्लीनिंग, मॉपिंग, टेकिंग डाउन द cobwebs, changing a bulb. They walk to the marketplace, walk to school, walk to their workplace, साइकिलिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं. सो बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी जिससे उनके जिस्म के सारे मसल्स और हड्डियाँ वो मोबिलाइज रहें. तो जो नेचुरल मूवमेंट है ना वो बहुत उनकी ज़िंदगियों में है. अ लॉट ऑफ देम लिव इन माउंटेनस रीजन्स जहाँ पे स्लोप पे भी चढ़ना है, उतरना भी है. तो एक बात समझ आती है कि जी. And people in Japan, for example, I mean, their level of fitness was amazing, absolutely amazing. So, yeah, incorporating activity in your daily life. So, being active, being on your feet is very important. And as they say, use it or lose it. So, चाहे वो मसल है या वो आपका ऑर्गन है या आपका दिमाग है, जिस चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो आप खो देंगे. सो पहली चीज़ तो है मूव नेचुरली. सेकेंड चीज़ है कि उन्होंने देखा कि जितने लोग लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं और रहते हैं उनका एक सेंस ऑफ पर्पस ज़रूर होता है. देयर इज़ अ स्पेसिफिक टर्म फॉर इट विच आई डोंट रिमेंबर, बट ये बात समझ आती है कि लंबी ज़िंदगी और एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक सेंस ऑफ पर्पस बड़ा ज़रूरी है. दैट व्हेन यू गो टू बेड एट नाइट there is a reason why you wake up in the morning. Now, that could be your family, it could be your children, it could be raising your children properly, it could be a book that you're writing, it could be your career, it could be anything.
बट अ सेंस ऑफ पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू दैट ड्राइव. तो वो ड्राइव के बगैर जिन लोगों में ड्राइव नहीं होता, वो मेरे ख्याल है डिप्रेस्ड भी ज़्यादा होते हैं, वो लोनली भी ज़्यादा होते हैं, उनको सेंस ऑफ पर्पस कम होता है, तो उनकी सेल्फ इस्टीम भी शायद कम होती है. अब सेंस ऑफ पर्पस का मतलब ये नहीं कि जी यू वांट टू ब्रेक थ्रू द ग्लास सीलिंग एंड यू वांट टू अचीव द अनअचीवेबल. इट कुड बी समथिंग सिंपल इज़ वेल, बट सेंस ऑफ पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रात को जब आप सोते हैं तो आप सोचें कि अगले दिन आपने क्या करना है, and there needs to be a streamline कि ये चीज़ें मैंने अचीव करनी है. As important as a sense of purpose is, point number 3 is the importance of knowing how to wind down. ये चीज़ हम लोग नहीं सोचते. हम लोग कहते हैं कि एक दिन में जितना कुछ पैक कर सकते हो कर लो, ए भी कर लो, बी भी कर लो, सी भी कर लो, किसी तरह एक्स वाई जेड तक पहुंच जाओ. पूरे 26 पॉइंट जो हैं वो अल्फ़ाबेट के आपने क्रॉस कवर कर लिए, सब कुछ कर लिया, घर भी देख लिया, नौकरी भी कर ली, बच्चे भी देख लिए, मियाँ भी खुश है, ससुराल भी खुश है, माँ बाप भी खुश हैं, एवरीथिंग, करियर भी चल रहा है, जिम भी कर लिया, डाइट भी कर ली, सब कुछ. सो देयर इज़ दिस नेवर एंडिंग sense of the need to keep on pushing yourself. And I think हम लोग overdo कर देते हैं इस चीज़ को. So जितना ज़रूरी sense of purpose है, उतना ही ज़रूरी है to know how to wind down and to take a break and to step back and do nothing. और आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरी अरिजीत सिंह की वीडियो देखी, उसमें मैंने कहा कि I went to Dubai for the concert. That was my purpose, but I also ended up spending a couple of days doing absolutely nothing. So वो जो nothingness है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है. So how to wind down, very important on a daily basis. So some people pray, that is their way of winding down. For some people, taking an afternoon nap is very important. As I'm aging, I realize कि मेरे लिए दोपहर को थोड़ा सा down time, whether I sleep or not is different, मगर डाउन टाइम बहुत ज़रूरी है. वो ऐसा वक्त, भले वो आधा घंटा हो, 15 मिनट हो, जब मुझे कुछ नहीं करना, वो रीबूट करने के लिए सिस्टम को बहुत ज़रूरी है. सो भले आप इबादत करें, आप दोपहर को सो जाएं, या आप शाम को, people who live in Western civilizations and who enjoy a drink, there is actually data that say people who have a glass of wine in the evening, are happier and live better. So of course we don't, but whatever works for you, whatever helps you wind down, it's very important. And apparently it adds to your life. So ऐसा नहीं है कि जो लोग 100 साल जीते हैं या जो लंबी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं होता. स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में होता है. It's just that when you're following these certain formulas, you learn how to deal with that stress a little better. So that is the key. Not having stress, because that's impossible, but how do you deal with that stress a little better? That is important. Point number 4 is nutrition and what do you eat. Now there are of course several parts to this, लेकिन डेटा ये बताता है कि ये जो 5 ब्लू जोन्स हैं, यहाँ पे जो कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि इन सब लोगों की डाइट जो थी वो एक ह्यूजली प्लांट बेस्ड थी. सो वेदर दे आर ईटिंग रूट वेजिटेबल्स, potatoes, sweet potatoes. There's a lot of beans and pulses and legumes, मतलब दालें, corn, different किस्मों के beans, different किस्मों की vegetables. इनकी बहुत incorporation थी diet में, whether it's in the form of cornbread or just a lot of grains, pulses, vegetables, root vegetables. कोई एक तो ऐसा जोन था जहाँ पे लोग sweet potato was like a huge part of their diet, and there was like uniformly they ate very little meat. अब हम लोग जो आजकल अर्बन सेंटर्स में रह रहे हैं और जो हम लोग जिम जाते हैं, तो प्रोटीन पे इतना जोर है कि आपने इतना प्रोटीन खाना है रोज़. एंड ऑफ कोर्स वी आर लिविंग वेरी आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल्स. They are making up for some deficiencies that shouldn't have occurred in the first place, but now that they have, we have to make up for them with additional protein or supplements. लेकिन जो लोग शुरू से healthy हैं, वो हेल्दी हैं जो कि मीट की कंजम्पशन उनकी बहुत कम है, ऑलमोस्ट लाइक 4 times a month, और वो भी छोटे पोर्शंस. सो या व्हाट यू ईट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ मच यू ईट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस कम्युनिटी इन जापान, they have a term which of course again I forgot the term's name, but you stop when you're 80% full, and आप कभी भी 100% फुल पे नहीं जाएंगे और उससे ऊपर तो कभी भी नहीं जाएंगे कि ज़्यादा खा लिया है, वो तो है ही नहीं. So always eat, it's the 80% rule they call it, always eat
so that you're full, but not entirely, just 80% full. Point number 5 is interesting. It's faith. To have faith, I mean, I think about 80-90% of the people who live to 100 believed in a higher power or had some form of faith. And that keeps you going. And of course, we know that the power of prayer, the power of spirituality, yeah, believing in God is a huge support. It's a huge support system. मैंने तो एक आर्टिकल भी लिखा था कि लोग मुझे कहते हैं कि जी आपकी फ्यूचर की क्या इंश्योरेंस है, तो मेरी जो नमाजें हैं मुझे लगता है दैट्स माय इंश्योरेंस फॉर माय ओल्ड एज, कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट है. तो having faith and belief, according to Dan Buettner, adds 4 to 14 years of life expectancy, meaning that people who believe and have faith actually can live up to 4 to 14 years longer than those who don't believe. So there has to be some logic to it, and of course we know that there is. And the last point, number 6, which is, of course, he has about 10-12 points. लेकिन मैंने 6 उससे निकाले जो मुझे समझ आए सबसे ज़्यादा. तो point number 6 और मेरा आखिरी point ये था, which I completely resonates with me, is the importance of family and community. All these communities in all 5 places in the world, ये जो 100+ वाले लोग थे, ये इनकी कोई फैमिली लिविंग है, कम्युनिटी लिविंग है. Like अगर शहर है, everybody knows each other in the neighborhood, families live together, the people take care of their parents and therefore their children are better taken care of. They have meals together, they talk, they have conversations, therefore loneliness kam hai, depression kam hai, and it's just a very wholesome way of living. और कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है. हम लोग इसकी मीनिंग अब खोते जा रहे हैं. मतलब इतने सालों से मैं एक घर में रह रही थी और मेरी बात होती थी नेबर से, but I actually had never met my neighbors. And I think that's shameful that you're living in an area where you don't know what the people around you, who they are. But that's the kind of life we're living these days. And it's really, it's sad. We need to reverse this. So these were my 6 takeaways from how to live longer, better, and happier. I think that another thing in common with all these people was that they had very little desire for material things. उनके पास cash flow नहीं था, but they were still living very fulfilled and wholesome lives. और उन्होंने ये कहा कि हमें कपड़े कितने चाहिए, नहीं चाहिए हमें, we don't need many things in our life, we need to eat well, so we want to eat the purest form of food, so we'll grow it. And then we want to किसी को हॉर्स राइडिंग का शौक है, किसी को रीडिंग का शौक है, किसी को योगा का शौक है, एक्टिविटी है, जो भी है वो बहुत कम पैसों में हो सकती है. कम्युनिटी लिविंग है, फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करती है. सो जो है ना, वो हमें जिस चीज़ों के लिए पैसे चाहिए होते हैं कि जी आप जेवर ख़रीद लें या प्रॉपर्टी ख़रीद लें या गाड़ियाँ ख़रीद लें या कारपेट्स ख़रीद लें, आर्ट वर्क ख़रीद लें, एंड वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ मटीरियल डिज़ायर. They actually are very damaging, I think, to the human soul. Unfortunately, we're all victims to it. So yeah, I'm sure you agree with all these 6 points. If there's anything that you think needs to be added to this list, please drop me a comment. And talking about comments, मैं हर 101 में कोशिश करूँगी थोड़ी रेगुलर हो जाऊँ अब दिसंबर से. न्यू ईयर रेजोल्यूशन और कुछ नहीं है, तो ये तो है ही कि अगले साल से I need to be a little more regular now that I'm settled in, alhamdulillah. So I will try and address a couple of comments from the previous video at the end of every new video. So last time I talked about moving and how to move easier, how to make the move easier and everything. बहुत लोगों ने पूछा कि जी आपने क्यों rented house में इतना invest किया. एक दो लोगों ने पूछा कि आप rented house में क्यों रहती हैं. तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है. जब मेरे पास पैसे होंगे अपना घर खरीदने के लिए मैं ज़रूर ले लूँगी. लेकिन उसकी और भी obviously एक multi-tiered रिस्पॉन्स है हर सवाल का. इतनी सिंपल कोई चीज़ नहीं होती. फिर ये कि जी मैंने क्यों इन्वेस्ट किया ऑन रेनोवेटिंग रेंटेड प्लेस. इट्स अ फैमिली प्लेस. इससे पहले भी मैं जहाँ रह रही थी वो भी फैमिली प्लेस था. और मेरी एक वर्बल कमिटमेंट है कि मैं एक्स नंबर ऑफ़ ईयर्स यहाँ रहूँगी. तो ऐसा नहीं है कि मैंने इतना इसमें इन्वेस्ट किया और अगले साल मैं आई पैक माई बैग्स एंड मूव अगेन. सो मैंने भी मेंटल कैलकुलेशन की कि what I can afford to do and spread it over like 5 years or 3 years, and what I can't do.
So I've done exactly as much as I could do. And at the end of the day, I do firmly believe, and this is my takeaway from all your questions, the one answer, is that रहना मैंने है और मेरे लिए एक अच्छी खुशगवार स्पेस में सुबह उठना या रात को सोना या उसमें रहना बहुत ज़रूरी है. So अगर if certain shade of paint makes that happen, or as somebody even actually made a jest at, oh आमना की ज़िंदगी का सबसे important चीज़ है कि जी जो wall commode है वो कितनी height पे लगे. It is very important for me, and of course these are material things and they shouldn't be. But we're human and we will err and we will make mistakes. So yeah, the reason why you invest in a rented place is because at the end of the day, aapne rehna hai, and until you can afford your own house, why live in something that doesn't give you 100% happiness? थोड़ा बहुत पैसे लगते हैं अगर पैसे ज़रूर लगाएं, अगर नहीं है तो नहीं लगा सकेंगे, कर्जा लेके ना लगाएं, लेकिन अगर हैं तो ज़रूर लगाएं, because end of the day ये आप ही का घर है, आप ही ने रहना है इसमें जितनी देर आप रह रहे हैं. बाकी ज़िंदगी कितनी लिखी है, आई विश के 100 years हर एक रह सके, मगर मे बी नॉट, आई डोंट नो. Yeah, but so yeah, that's that. Any questions regarding, how to live longer, better and happier, drop a comment. Any questions generally, drop a comment. I love hearing from all of you. And I hope that you guys have subscribed and also liked the channel, because it gives me purpose to make these videos for you. And it really gives me a sense of community as well. So, signing out.